हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो हाउ टू प्रेजेंट वेल व्हेन यू आर एट वर्क और व्हेन यू आर इन कॉलेज, व्हाटएवर इट इज। इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम अ सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड लेट मी शेयर अ डिस्क्लेमर विद यू कि मैं हमेशा से ही कॉन्फिडेंट नहीं थी और अभी भी जब मुझे किसी से ग्रुप में बात करना होता है मुझे नर्वसनेस फील होता है। तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। नेवर एवर ट्राई टू फाइट इट बिकॉज द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स। तो दैट इज द बेसिक rule that I would like for you to follow as and when we move ahead in this lesson. Okay, so today's lesson is about presentation skills. Let's begin. So सबसे पहला जो टिप है दैट इज प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी प्रेजेंटेशन का पार्ट बनना है और कहीं भी बात करनी है तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, इट्स अ टोटल डिजास्टर। You cannot go and speak impromptu. Even the biggest people who are motivational speakers, who are presenters, they practice well and they do all the necessary homework. And how can you do the necessary homework is through doing all the research that you need to present in front of people. जो भी आपका टॉपिक है उस पर जरूर टाइम स्पेंड कीजिएगा। एटलीस्ट 10 दिन पहले मैं कहूंगी डू ऑल द रिसर्च पॉसिबल। व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर लिसनर्स, व्हाट वुड योर लिसनर्स वांट टू हियर फ्रॉम यू, इफ यू वर इन देयर शूज व्हाट वुड यू वांट टू लर्न फ्रॉम द पर्सन हु इज स्पीकिंग। तो ये सारा रिसर्च करके आपने अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, स्पीच तैयार कर लिया है, और फिर 4-5 दिन पहले अपना मिरर वर्क शुरू कर लीजिएगा। Like stand in front of the mirror, look at yourself, and if you are proud of yourself, you are listening to you, then let me guarantee you everybody who is present in the room will love to listen to you. Okay, I suggest, and also 4 days, why I'm saying is as you're doing the research, जब आप वेरी सीरियसली इन टॉपिक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एनग्रेव हो जाता है। ठीक है, तो this is one very simple tip. The second one is looking into the eyes of your audience. Now this is not easy. मैंने बोल दिया जाके eyes of the audience देख लो and then आपको फिर easily आप जाते हो and you look into the eyes of the audience. That it doesn't work like that. That again is practice. एंड ये शुरू होता है सिर्फ प्रेजेंटेशन से पहले नहीं, हमेशा ज़िंदगी में जब भी आप न्यू लोगों से मिलते हो, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज गैंग, लेट्स से you've gone out for a party or you're at work, you're in some meeting, practice looking into the other person's eyes and then talk. And the more you inculcate this habit in you, the more comfortable you become looking into people's eyes and connecting with them. This is a very useful tip, and that is stage fright is not your biggest enemy. A lot of us think कि stage fright होना बहुत ही बुरी बात है, I'm scared and people मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, क्योंकि हर एक इंसान को stage fright होता है। The beauty is that they make peace with it, they make it their friend and relax and then go ahead. So how can you make stage fright your friend? Accept it that you are nervous and you are scared, and take deep breaths while you are on stage. Just when you're being introduced as a speaker, that is your time, that is your moment where you can take slow deep breaths. And let's say for some reason your time has come to start speaking, you take a few seconds pause. Nobody is going to shoot you out there, right? You are being vulnerable, you're being honest, and that is what people will appreciate. And when you're breathing, when you're talking slowly, you appear and you feel more confident because you need that oxygen to go into your brain, and that in turn is going to make you feel calmer. Now I am a very fast speaker, my rate of speech is very fast, and then I realized that Like when I have conversations, I sound nervous, even though I'm not at times, because I'm talking so fast and then I'm not able to catch my breath, and then it's all like everything is going on haywire. So this is something I'm really practicing and it is helping me. I guarantee you it will help you too. Next one is it's okay to use filler words. We always keep listening from other coaches that do not use filler words, but unless you make peace with those filler words, you will not be able to get them out of your vocabulary. Okay, one tip is
practicing this exercise, that is, जब भी आप बात कर रहे हो और आपको आ ऊ सब बोलने का मन करे, जो मैं अभी भी करती हूँ, you need to take a pause, just try to not say anything, how much ever you feel the urge, and that is the time when you're gathering your thoughts. Okay, तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्शियसली ये अपने माइंड में रख रही थी, एंड इसीलिए आपने इस सेक्शन में देखा होगा कि आई एम नॉट डूइंग आ ओ ई एंड दोस फिलर वर्ड्स. सो वर्क ऑन नॉट यूजिंग फिलर वर्ड्स, बट एट द सेम टाइम डोंट फाइट इट. एंड फाइनली जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज द पावर पोज. Power pose, I tell you, is super duper helpful. Power pose is something that is tried and tested by me. So I conduct a lot of workshops online, offline, and मुझे जब भी वो डर लगता है, मैं क्या करती हूँ, I'll go off to the washroom या प्रेजेंटेशन से पहले जहाँ पे भी मुझे मिरर दिखाई दे, घर, before I leave home, I stand in front of the mirror, I lift both my arms up like this, saying that, yes, Neha, you can do it. Okay. Now, when you're in the washroom, you can't, I've not reached that level where I'm okay with screaming, because people might just get a shock of their life कि ये क्यों चिल्ला रही है. तो माइंड में मैं सोचती हूँ कि हाँ, आई एम totally self-expressed, and then I say a special prayer to God कि God, people are coming to listen to me for a reason, there's a purpose behind this, and please speak through me and let each one listen to exactly what they are meant to through me. Say the prayer, do this combination, power pose plus prayer. It really, really helps. Okay. And just before the presentation, one thing that you should not do is go through everything, because उस लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं जाने वाला दिमाग में, तो कोई फायदा नहीं है. जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, प्ले सम लाइट म्यूजिक. And trust me, when you shift your energy, it works. Your focus is not on nervousness. So these were a few simple techniques that I use personally. And ये topic बहुत ही ज़्यादा huge है. We can go on and on, but for the sake of time and some sort of freemium classes that I would like to give you, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये छोटू सा वीडियो बना रखा है. सो प्रैक्टिस दीज, लेट मी नो इफ इट हेल्प्स, एंड डू लेट मी नो व्हाट अदर टॉपिक वुड यू लाइक फॉर मी टू कवर फॉर यू. This is Sneha, your holistic happiness coach. Follow me on my social media pages. I do a lot of free classes as well as super valuable paid classes, so that you stay updated on this. Go ahead, follow me there. Bye bye.